all of us deal with pressure in different ways. How did you deal with pressure? Badly. Because I'm a human being and I don't like pressure. And I didn't deal with it well. But I learned to coexist with it. I learned to find a way to work myself in those situations. But did I enjoy it? Did I enjoy pressure? No, definitely not. That was not for me. I was in a sport which was kind of a lonely pursuit. You know, shooting is very individual, and at least in my era, in the mid-90s, early 2000s, it was not the way it is developed as of today. You know, I had a lonely sort of a career, but my constant companion in these 20-odd years in sport was self-doubt. So self-doubt and pressure, not a good combination. But I found ways to deal with it. I think one of the biggest things that really helped me deal with pressure was accepting it. I think that is very important. I think when we go to an Olympic Games or when we have pressure as human beings, and especially human beings like me who don't take pressure well, we resist it because it's uncomfortable. It's not something we like. But the moment I started accepting it and learning to coexist with it, it became a little bit easier. And I could at least start focusing on the process of what I had to actually do to execute my skills. So Athletes, how do you manage so many successful athletes as a coach? I think, as Abhinav has said it, I think you learn to coexist with the differences. I think one of the bigger things, I think, for me, maybe the last 15 years of coaching, right from 2004 when I started to maybe 2017, 18 were a different ball game. And the last few years have been very different. Today, there's a lot more media attention, there's a lot more social media, there's a lot more people involved in the sport, whether it's sponsors, managers, NGOs, federations, sometimes judiciary, politicians. There's too many people involved. So at the moment I get up in the morning, I say, I've done what I have to do over the years. I get up in the morning, do the best of what you can do, just stay happy, and then push in the things which you can push and forget about the things which you cannot change. And I think that has been something which has been clearly the case. As far as shutting off is concerned, I've figured out a lot of ways of shutting off, so I don't let things which bother me surface up too many times. So I think that's one way of keeping the ecosystem a bit sane. Okay. How do you deal with that kind of pressure? बहुत खुशी हुई कि बैक टू बैक मैंने मेडल दिया है इंडिया के लिए. बस जो भी मैंने आज तक मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, ये पूरा भारतवर्ष ने मेरे लिए इतना प्रे किया है, प्यार दिया है, तो मुझे लगता है उनकी वजह से मैं मेडल जीती हूँ. तो मैं आगे की भी मैं आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ. पूरा मेरे तरफ से कोशिश रहूँगी. और प्रेशर तो होते ही है, ये हर प्लेयर्स के ऊपर होते हैं प्रेशर में से हमको सीखने को मिलते हैं कि मैं आगे के लिए और भी अच्छा करूँगी. ओके. मुझे लगता है कि फैमिली का सपोर्ट रहता है सबसे पहले, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था जेवलिन के बारे में. जब मैं स्टार्टिंग में स्टेडियम में गया तो जस्ट फिटनेस के लिए गए थे. उसके बाद धीरे धीरे 1-2 साल लगे कि अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाने में. और फिर जो एक हमारे पास एक लिमिटेड कॉम्पिटिशन होते थे, हमारे पास जूनियर के कॉम्पिटिशन होते थे और इंटर डिस्ट्रिक्ट था उस टाइम पे. तो वो बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से टैलेंट छट जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे एथलीट्स आते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट में खेलने और हज़ारों की तादाद में वहाँ पे एथलीट्स होते हैं और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है कंपटीशन करने के लिए. तो 2012 में मैं खेला था और हरिद्वार में हुई थी तब. तो बहुत ही अच्छी शुरुआत थी. वहाँ पे मैं खेला था, वहाँ पे मैंने गोल्ड जीता था. डिस्टेंस भले ही काफ़ी कम था, लेकिन एक वो गोल्ड था जो एक बूस्ट था मेरे लिए कि भाई मैंने नेशनल में गोल्ड जीता है. और आगे जाके क्योंकि वो काफ़ी अच्छा एक फेडरेशन ने कंपटीशन चलाया है और मैं तो वही है सर, आशा करता हूँ कि ऐसे ऐसे कंपटीशन और ज़्यादा हों. और मुझे लगता है कि अभी हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम कॉन्टिनेंटल टूर से लेके ऐसे कंपटीशन भी करवा सकते हैं जिनके
जिनको देख के बाहर के जो लेजेंड्स हैं, जो एथलीट्स हैं इंटरनेशनल, जो ओलंपिक्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं, वो इंडिया में खेल रहे हैं और इंडियन एथलीट्स उनको देखें, उनके साथ compete करें। तो मुझे लगता है कि ये हमको कोशिश करनी चाहिए कि एक स्पोर्टिंग पावर बनाने के लिए अपने नेशन को हमको ऐसे बड़े कंपटीशन अभी करवाने चाहिए, जिससे कि जो एथलीट्स बाहर खेलते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक्स में, वो इंडिया में खेलें और हमारे एथलीट्स उनके बीच में compete करें और उनको परफॉर्म करते हुए देखें, ताकि उनको पता लगे कि भाई ये ऐसे ऐसे ये परफॉर्म करते हैं, उनका माइंडसेट कैसा है, उनसे मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि हमको इस बारे में आगे सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत अपना स्पोर्ट्स चेंज हो रहा है और हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। और बिल्कुल हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टॉप्स बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है और आशा करते हैं कि ऐसे ही वो सपोर्ट करते रहे और हमारा हर एक ओलंपिक स्पोर्ट, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो इंडिया का, वो सभी ऊपर उठे। Okay. Nikhat Zareen, world champion, one of our best bets for Paris. Over to you, Nikhat. So basically, I was into athletics before coming into boxing. In 2009, I have started boxing, and I remember I was the first woman to start boxing in my district. Or it was very tough for me to make my own name in this sport. I remember जब मेरा first sparring session था लड़कों के साथ, and they have beat me a lot. बहुत ज्यादा पंचेस लगे थे मुझे, एंड माई आई बिकेम ब्लैक एंड माई नोज वॉज ब्लीडिंग। तो मैं ऐसे ही हालत में अपने घर गई थी और मेरी मम्मी ने मुझे देख के रोना स्टार्ट कर दिया था, एंड शी स्टार्टेड आस्किंग मी कि अरे बेटा, मैंने तुझे बॉक्सिंग में इसीलिए नहीं डाला कि तेरा चेहरा खराब हो जाए, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो तेरे से शादी कौन करेगा, और पहले ही मेरे 4 बेटियां हैं, और तुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे जो बड़े बेटियां हैं दोनों, उनके लिए रिश्ते भी आने बंद हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, ऐसे सब सवाल करेंगे। तो मैंने बोला था अरे अम्मी आप टेंशन कहीं को ले रहे, नाम होगा तो दूल्हों की लाइन लग जाएगी। सो दैट्स हाउ आई चेंज माय मॉम्स माइंडसेट, एंड सिंस देन अभी जब मुझे मार लगता है तो शी कैजुअली सेज कि अरे कोई बात नहीं बेटा, आइस लगा ले, ठीक हो जाएगा।